मुसीबत में फंसने वाली है अबीरा, क्या बचा पाएगा अरमान? आपको बता दें, स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे किस तरह से अबीरा मुसीबत में फंसने वाली है। अब इन सब से क्या अरमान उसे बचा पाएगा? चलिए बताते हैं सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में क्या क्या होने वाला है। भाई, आप एक तरफ देख चुके हैं अबीरा ने घर छोड़ दिया है। घर छोड़ने के बाद अब अबीरा के पास रहने की जगह नहीं है, जिसको लेकर वो बहुत परेशान है। वहीं अपने फ्यूचर को लेकर यानी कि करियर को लेकर, अपने सपनों को लेकर भी वो बेहद परेशान नजर आ रही है। अब ऐसे में वो जाती है अपने कॉलेज के सर के पास, जहां उनसे कहती है कि मुझे अपनी इंटर्नशिप को एक्सटेंड करना है, लेकिन यहाँ पर वो जो सर है ऐसा करने से उसे मना कर देते हैं। इतना ही नहीं, जो अबीरा की थोड़ी बहुत फी होती है वो भी उसे रिटर्न कर देते हैं। अब इस बात से अबीरा बेहद परेशान है। आप देख सकते हैं अबीरा के हाथ में पैसे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। अबीरा बहुत परेशान है। इतने में ही मनीषा, क्रिश वगैरह अबीरा को फोन करते हैं। वो वीडियो कॉल करके अबीरा का हाल जानना चाहते हैं, क्योंकि अबीरा से वो लोग कितना प्यार करते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। अब भी जब अबीरा ने घर छोड़ा था तो सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने अबीरा को इतना ज्यादा परेशान देखकर वो भी परेशान हुए थे, वरना सब के सब जो थे वो तो अबीरा के जाने से बेहद खुश नजर आ रहे थे। लेकिन अबीरा जो है वो कभी हार नहीं मानती। उसने सोच लिया कि ठीक है, अगर अरमान किसी और के साथ खुश है तो उसे खुश रहने देती हूँ। ये सब बातें हो चुकी हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं अबीरा उन पैसों के साथ मनीषा को दिखाती है कि देखो देखो मेरे पास तो पैसे मिल गए, और ये सारी बातें पीछे खड़ा हुआ अरमान सुन रहा है। आप देख सकते हैं अबीरा झूठ झूठ उन लोगों को कहती है कि मेरी तो जॉब भी लग गई, देखो देखो मुझे एडवांस में पैसे भी मिले हैं और मुझे घर भी रहने के लिए बहुत अच्छा मिल गया है। वो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन पीछे अरमान जो खड़ा है वो बहुत गुस्से में होता है, अंदर कमरे में जाता है। अब अपना फोन जो है अरमान फेंक देता है और गुस्से में बहुत परेशान होता है। कहता है अबीरा तो मेरे बिना खुश है, पता नहीं उसको कुछ भी नहीं चाहिए मुझसे। ये सारी बातें हो रही है। अरमान की इनसिक्योरिटी दिख रही है कि अबीरा को लेकर वो कितना परेशान है। दूसरी तरफ अबीरा जो है अब रूम में खड़ी है, अब जहाँ पर उसने सबसे झूठ बोला है, लेकिन वो बहुत गंदे से रूम में जाती है जहाँ उसे अचानक से एलर्जी होती है और वो नीचे हे गाइस, व्हाट्स अप। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, we can see, let's analyze some of the market with SMC. So going back from here, this is BOS, that is break of structure. So we will just see this is a break of structure and this is to a break of structure. Okay, so we can see it is just break of structure. Also inside of a structure and structure, we can see, if you go the deep inside of structure, you can see this is this has inside the BOS we go another break of a structure. It means the now the market has changed its direction. So this is the way to you this. As you can see, the high is broken, so if it is broken we shall go for upside. That's the point of the market. So as you can see, it was just inside candle. After it is broken, a simple way is like, if the market is broken on the upside, we should go for the upside, and if the market is broken the downside, we can go for the downside. So it will be like this, or we can choose the stop loss. Can this can be the stop loss. Also stop loss can be this swing low can be stop loss. So we can choose this stop loss, and the target should be the first this one. So if you choose this one, that will be the risk reward is 1:2. But if you know this has given more than
more than 1:5 risk reward. So as you can see, this is just risk reward of more than 1:5. Okay, so forget about that. Now let's see. This is BUS. This is lower low. Okay, as it is broken, it is broken. It should come as it is broken. How it is broken? As you can see, the candle has closed above it, so it is broken. So what we can choose? The the swing low candle. It is what's so it's the OB. OB means order block. Okay, and above OB, just above the OB, there will be FVG. So if you can see this just above OB, this is the FVG. And guys, if you choose the FVG very correctly, you know what your result you can get. So basically, you can get the result of like this. Just a moment, I have choose. Okay, so we have just this swing. This is the swing. So we can get a result up to first one is this, that will be upon 1:1 risk reward. But remember this, if the OB is broken, okay, if the OB is broken, that's the same thing. The again this one will be OB. The BOS is broken, again the bottom one will be the OB, and above OB we will get FVG. If you know this, that's the great thing. Remember this is FVG. So if you know this, then we can shift our SL here, and again we can look for an entry here. The stop loss will be the below this, and the target will be this one. That's the thing. If you can see, it is a scalping type thing. But if you see same thing pattern, it is following BOS. The BOS is broken. Okay, we have now two trades here from bottom. Remember that. I am not calculating the thing above. Okay, so as you can see, this break of structure, this candle has given a break of structure. So again, we will go full to bottom. As you can see, this one is the OB. So we have got a big OB. And if you see this candle and this candle, this is FVG. That's the FVG candle. Okay, as you can see this on the FVG, we have got what type of result. This is the result we have got on FVG, a non-stop candle. As you can see, so if you calculate 1 to 3 trades, as you can see, a trade which we got with our risk reward. But the thing is, you need to learn this thing. That's why I say, guys, trading is the easiest way to trading is the hardest way to make easy money. People think it is the easy way, but no. If you can't find the FVG and OBG, and if you in the live market, if you're not able to do it, then it will be all waste of us. You can't even trade. So guys, as you can see, okay. So as you know, this the order block has been okay. Let me tell you one more thing. So as you know, this trade has been done. Okay, as I have taught. Now let's remove this thing. So guys, this we are doing on a XAU USD trading. XAU USD live trading. So let's see. So guys, as I have told, if the OB is blocked, if the OB is broken, OB not, if the BOS is break of chart, if there is a break of chart, means we have the higher high. So the lower point will be OB. OB means order block, and above OB, from here to here, we will get FVG. So guys, just correct me
I am wrong, and the target will be the swing high. Okay, so let's see. We have got an entry. We will just modify the more things in it, and target is the high one. Okay guys, let's see. So guys, just look at the risk reward. It is 1 is to 10. 1 is to 10 means if you got $1,000, $100 risk, you will get $1,000. A simple thing. But remember the thing: if you have trailed the stop loss, there is a term in trading, that's trailing. Remember the thing: we have got much more than that, and bottom trade 1 is to 37 risk reward. How do you got it? Just because of OP. We have got the first target here, our entry. If we hadn't analysis all this, we won't get this trade. Directly we cannot go to the third part before analysis the backtest. Okay, so this is the trading, guys. This is the trading. Okay guys, so remember this thing. Let's clear this and analysis the downtrend, how we got a downtrend. As you know, we have got the higher high. Okay, that's the higher high. If this is broken, we will get BOF. If not, then there is an this is called IDM. Before the higher rise, the swing is called IDM, and before the swing, this is called chalk. Chalk means change of character. Remember the thing, guys. Chalk. Let me change the setting for the chalk. Save as